Hello, everyone. We'll start in a couple of minutes. Just give me some time, okay? Then we'll get started and we'll do our top down analysis and everything, okay? Hello, hello.
What's up, Ansh? Let's just get started. Give me a minute, okay? And then we'll get started. How are you? आज कोई ट्रेड तुम्हें मिली? तुमने कोई ट्रेड ली? If yes, let me know. If no, then let me know too. Hello, hello, hello. Hello, 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 everyone. Let's just get started. Hello, hello, hello. What's up, everybody? Just give me a minute. मैं थोड़ा chats को set कर लेता हूँ and then we'll start with our top down analysis, okay? तो how are you and how's everything going? Yesterday हमने एक 2 ट्रेड की थी, तो मैंने उस पर शॉर्ट बनाया है. If you guys are interested, तो वहाँ से जाके देख सकते हो, okay? Hello, Filmy Gyan, how are you? What's your real name? Just give me a minute. मैं chat को fix कर लेता हूँ, okay? Hello तुषार, how are you? I hope you're doing well. कुछ बताओ अपने बारे में, कितने समय से ट्रेड कर रहे हो एंड क्या ट्रेड करते हो, व्हाट इज़ योर फेवरेट पेयर, ऑल ऑफ दैट. Okay.
तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल? एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड आई गेस, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल वाली ट्रेड को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। दिस वाज द ट्रेड वी टुक एंड वी आर टारगेटिंग दिस एरिया राइट हियर, बट आई गॉट आउट अर्ली बिकॉज देयर वाज न्यूज़। तो वी मेड अराउंड 90 पिप्स आई गेस। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, सी हमारा जो चैनल है इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग द डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग द साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। बिकॉज जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम पिछले 1 साल से मार्केट में हो तो इट इज़ जितना मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा खुद का एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू टीच इन दिस चैनल। तो वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर शोइंग अप। प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब टू दिस channel. Okay, and let's just get started. First of all, we are going to look at the charts and see कि आज कोई न्यूज़ अवेलेबल है क्या। ओके, तो अगेन आज काफ़ी वॉयलेंट डे होने वाला है। यूएसडी की काफ़ी सारी न्यूज़ है हमारे पास, एनएफई है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी है, तो इसको मैं पहले अपने ट्रेड राइटअप में मेंशन कर लूँगा। ओके, सो लेट्स जस्ट मेंशन इट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एट 1900s, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी रहने वाली है। ओके, तो मेक श्योर कि अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो अपने स्टॉप लॉसेस को रखो, अपनी मनी को प्रॉपरली मैनेज करो। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ आवर टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, तो वीकली से देखते हैं। वीकली में मार्केट सीम्स टू बी अगेन बुलिश एंड वी क्रिएटेड सम काइंड ऑफ सपोर्ट राइट हियर, and ever since this support is created, market seems to be bullish, and right now we have a resistance forming right here at this point, which is 96.98. Okay, hello Faisal bhai, how are you? हेलो चिप्पी। या आज एक्चुअली शिवरात्रि थी ना, तो आई वेंट टू मंदिर, सो दैट्स व्हाई आई वोर शर्ट। एनीवे, हैप्पी महाशिवरात्रि एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉप डाउन एनालिसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट सी कि क्या हो रहा है। तो ये वीकली के लेवल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट दिस 2 लेवल्स ऑन वीकली। इसे फर्दर अगर ब्रेक डाउन करेंगे डेली में, या तो मार्केट वॉज बुलिश यस्टरडे, बट न्यूज़ में देर वॉज लाइक काइंड ऑफ डेप। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने ये ट्रेड ली थी, इट वर्कड आउट फाइन, बट आई थिंक आई कुड हैव मैक्सिमाइज दिस बिकॉज दिस वॉज अ प्राइमरी टारगेट। तो आज देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली में हमने लेवल मार्क किए थे, देयर यू गो, वी हैव अ सपोर्ट मेड राइट हियर एंड वी हैव अ क्लीन स्ट्रक्चर टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑन वीकली, एंड मार्केट इज येट टू क्रिएट अ न्यू रेजिस्टेंस। तो आई थिंक the probability of getting a sell is pretty high. So let's just mark this level on our 4-hour chart. There you go, and there you go right here. Okay, इसे further break down करेंगे 1 घंटे के चार्ट में, and you will see कि market has created some kind of resistance right here, and उसके बाद we have fallen pretty good till this area right here. Okay, इसे further break down करेंगे 30 मिनट के चार्ट में। तो you will see कि we came down, we created this support right here, so this will be my sell below level, and I think we can take a sell, an aggressive sell if this area breaks. Okay, so that's what I'm going to mark down. This will be my sell below level. I'll extend this area. Okay, and this area right here, because this is my primary target, I'll be looking for buy above this, यानी कि अगर मेरा stop loss होता है तो I'll be flipping on this level right here, and I have a buy above level right here. ठीक है, so there you go, and this complete range is our no trade range. Okay, so there you go. This is just for our top down analysis. Basically I'm looking for a sell if this area breaks. For buy I need break and close of this area right here. For buy I need this, something like this, and for sell if this area breaks I can take a sell from
this point right here to this point right here. Okay, so this will be my first target. ओके तो वी गॉट अ क्वेश्चन, लर्निंग तो पूरी की है बट स्टार्ट करने से थोड़ा डर लग रहा है, स्टार्ट कैसे किया जाए, आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए। वेल फॉरेक्स मार्केट में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यू नीड अ ब्रोकर। तुम ब्रोकर कोई भी चूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर कि वो टीयर 1 या टीयर 2 से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे तुम अकाउंट खोलते हो मेक श्योर कि तुम सबसे पहले एक काम करो, अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करो, अपनी प्लेबुक को डेवलप करो, अपने सेटअप्स को डेवलप करो। मतलब कौन सी ट्रेड तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अपना डाटा बनाओ, ठीक है। उसके बाद अपनी प्लेबुक जब तुम्हारी रेडी हो जाएगी उसके बाद ट्रेड्स लेना शुरू करो विद अ रियली स्मॉल रिस्क। एंड अपनी जो जर्नी है, मतलब जो अपनी ट्रेडिंग है उसको एक जर्नल में नोट डाउन करना शुरू करो। एंड ईच ट्रेड जब तुम एक लेते हो तो ये फोकस करो कि तुम इसमें क्या बेहतर कर सकते थे, दैट इज़ इट। एंड समय के साथ साथ तुम प्रॉफिटेबल बनने लगोगे, बट मेक श्योर कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज ना करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते हैं कि अपनी कोई भी एक स्ट्रैटेजी से स्टिक नहीं रहता है, दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड पीपल लूजिंग मनी, ठीक है। सो या आई एम गोइंग टू बी एंटरिंग दिस ट्रेड, but for that I need 2 consecutive closes below this level right here, तो let's just wait and see। तब तक हमारा ट्रेड राइट अप कर लेता है। तो this 5 minute candle is closed with almost no wick at the bottom। I think I'll wait for one more 5 minute candle। if I see aggressive volume then I'll only try to enter this, but right now there is no trade, ठीक है। तो अगेन previous day was pretty bullish and we are at the resistance। dude गलत एडवाइस मत दे। of course you can make a lot of money but you have to be disciplined first, like first 5 years all about discipline। hello Akash bhai, how are you, good morning। okay, तो previous day was bullish and target was already achieved and previous day was bullish and market is completed the journey towards 1822, again same ही है। उसके बाद अगर आज का एनालिसिस देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस ट्रेड राइट अप बाद में करेंगे, थोड़ा पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं मार्केट की। वी हैव अ 3 minute टू गो ऑन दिस कैंडल क्लोज। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड बिकॉज आई नीड अ क्लोजर। तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि ये कैंडल किस तरह से क्लोज होती है, ठीक है। तो फॉर टुडे H4 इज स्टिल बुलिश, फॉर टुडे बुलिश एंड अगेन if we see a structure break at 30 minute chart we will take a sell। we have created a resistance at 95.21, ठीक है। 95.21, if that breaks and test we'll take buys, okay। and for sell we have created a support at this level right here 9442, तो मैं उसे भी mention कर लेता हूँ 9442। if this break test के लिए तो we won't go for test because this is already a structure break। तो अगर वैसा होता है तो we'll be taking a sell and our target is like 20 pips, okay। एंड अगेन ये हमारे कुछ रूल्स है, टू कंक्लूड कर लेता हूँ मैं जल्दी से। वी आर लुकिंग फॉर सेल, looking for sell if 9442 breaks, okay। there you go, our setup type, this will be breaking support, sorry this will be structure break, okay। structure break, there you go। एंड आर ट्रिगर इज ब्रेक, हमारा जो ट्रिगर है वो है एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक द पोजिशन। ऑन साइज वाइज आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग 0.50%, बट इफ आई सी दिस ट्रेड मूविंग इन माई फेवर आई ऐड अग्रेसिवली टू द ट्रेड, ठीक है। तो अगेन हमारे रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 रूल इज़ कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, ओके। मार्केट इज़ टू मच अनसर्टन, यानी कभी भी किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन रिस्किंग टू मच इन एनी गिवन ट्रेड,
ओके, दिस इज़ आर नंबर वन रूल। उसके बाद कोई भी ट्रेड का एक फिक्स आउटकम नहीं होता, किसी भी ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना कि उसके लॉस में जाने के चांसेस होता है। ओके, तो किसी भी ट्रेड में हद से ज़्यादा रिस्क करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। उसके बाद हमारा जो थर्ड रूल है वो है कि ऑलवेज स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ योर एज। मतलब अपनी जो तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है, अपनी जो तुमने प्ले बुक बनाई है, उसके साथ स्टिक रहो एंड उसको फॉलो करो, इवन चाहे तुम्हारा स्टॉप लॉस हो या फिर तुम्हारा टेक प्रॉफिट हो। ओके, अगेन उसके बाद हमारा फोर्थ रूल है कि द मोर यू लूज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। एंड उसके बाद ये हमारे रूल्स है, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम राइट हियर। Okay, I think I'll be taking this trade in, we still have like 41 seconds to go. And I'm going to be risking about 0.5% on this particular trade. Okay, stop loss wise, I'm keeping it at 95.17 and yeah, stop loss wise, I'm keeping at 95.17. There you go. ठीक है, this is a bit risky trade because this is early in the morning, but let's just try this and how this works. It's going to be interesting to see. You go, we are in this trade. The reasoning was simple because we're having a structured break and this candle seems to be good and we have a lot of volume in this particular two candles, 1 2 you see. So I have opened this trade. Now let's just see how this is going to play out. For stop loss I have kept it at this area right here. Okay, about adding to a position, I'm not interested in adding to this position at the moment. We'll see how this will go. Okay, so sorry Ansh, but let's just look at your message and your chart. So yesterday took one trade and 42 and then did overtrading, lost $30. I think it's okay, it's completely okay as soon as you are doing your DRC, अपना डेली रिव्यू सेशन कर रहे हो तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो okay, so this is how you do a DRC, daily report card. First of all, price was consolidating, that's a good point. Entry was taken when 30 minutes started to break the high of a previous candle. Again, this is a really good point too. And yeah, this is a good example of a DRC. Congratulations on your trading, buddy. Okay, so we just took this trade. I'm not sure market में इतनी volatility कहाँ से आ रही है, but when this 5-minute candle start to close, I'll close like 50% of my position right here. I'm not practicing sizing up on a trade right now because I think I need to create a proper structure before I start to add more to my positions. So that's why I'm not adding to a position at the moment, but will consider soon. ठीक है, ये मंथ का लिए मेरा टारगेट, ये मंथ के लिए लाइक गोइंग फॉरवर्ड माई टारगेट इज़ कि टेक इट स्लो अ बिट because I lost like 7 to 8% totally in last few weeks. Because एक में तो मेरा स्लिपेज हो गया था, उसके कारण 3% का लॉस हो गया था एंड 2 ट्रेड्स में मेरी रिवेंज ट्रेडिंग थी, तो ऑलमोस्ट 6 to 7% का लॉस है। तो आई हैव रिड्यूस द रिस्क and I'm focusing on I'm focusing on news जिस दिन because जो FOMC वाले जो फंडामेंटल्स है, those are my strong fundamentals and I make a lot of money on those newses. तो गोइंग फॉरवर्ड यही मेरा प्लान है कि जो मेरा A++ सेटअप है उसमें मैं ज़्यादा रिस्क करूँ गोइंग फॉरवर्ड। या आई शुड पोस्ट इट डेली। मैं कल वाला रिपोर्ट कार्ड शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो दीज वर द DRC।
ओके, तो these were the DRC of 7 मार्च 2024। अगर तुम नोटिस करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक मिस ट्रेड थी जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, एंड उसके बाद दिस इज़ माय DRC फॉर यस्टरडे, देयर यू गो। तो दिस वाज माय ब्रेकिंग स्ट्रक्चर सेटअप एंड दिस वाज ट्रिगर वन एंट्री टाइप। ठीक है, आई टुक दिस एंट्री राइट हियर ऑन दिस बार एंड क्रिएटेड दिस सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मेरा 30 मिनट का चार्ट है एंड दिस इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ 15 मिनट चार्ट। यहाँ पे मैंने और चीज़ों को मेंशन किया है, एंड यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि आई क्लोज टू अर्ली, दिस पोजिशन आई क्लोज टू अर्ली, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू वर्क ऑन इन माई ट्रेडिंग। I'm still closing the position early. I think before increasing the size, I should be focusing on कि I should focus on कि मैं अपनी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड कर सकूँ. That should be my primary goal. And once I master holding the trade to profit, I can then I can master कि ठीक है, अब this is the time to add more to a position. I think that will be a good approach going forward. एंड मैं स्लाइटली जो हम डिस्कस किया था कि किस तरह से ऐड करना है पोजीशन में, उसको स्लाइटली ट्वीक करने वाला हूँ। आफ्टर गेटिंग अ सेकेंड ट्रिगर आई लाइक मूव माई फर्स्ट पोजिशन स्टॉप लॉस टू ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, नॉट ब्रेक इवन बट टू अ 15 मिनट एटीआर वैल्यू, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पोजिशन है उसका स्टॉप लॉस आई एम गोइंग टू बी कीपिंग एट 5 मिनट एटीआर वैल्यू। सो दिस इज़ द प्लान गोइंग फॉरवर्ड। Okay, so we have a candle closure right here. We have closed a straight bullish candle and we have some kind of slight buying right here. I don't see it as a sign of closing the trade right now, though I don't think I will be. But if I will close the trade if I see 5 minute structure break. मतलब अगर मुझे 5 मिनट के चार्ट में दिखता है कि market is like moving, then I'll be interested in closing the trade. But right now we are just holding the trade until this TP happens or we see a structure break in 5 minute chart. Okay. All right, so how is everyone doing? Okay, about this current candle, we took this trade based upon impulse entry on 5 minute chart because हमारे पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक है 30 मिनट के चार्ट में, that's why I took this trade. And we will close like 50, like we will close this trade if I see like 5 minute trend break. Okay, so this is my trade. How are you guys? And अगर तुम्हारी कोई trade active है तो let me know and let me know the reasoning behind it, why you took it. वैसे I have a good news guys. Okay, so we got a comment from Ansh. He's saying, so the way now I'm managing risk is, let's say I took a trade based on 30 minutes, so I will manage risk based on 15 minutes. Managing risk on 5 minutes is too much struggling to me. Yeah, I think it's totally a good point. अगर तुम जो तुम्हारा प्राइमरी टाइम फ्रेम है उससे एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाओ एंड वहाँ पर ट्रेड को मैनेज करो, that's a smart thing to do, totally. वैसे हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप आई है रिसेंटली. आई डोंट नो इफ आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट. आई थिंक आई विल बिकॉज एक लाइक टियर 1 ब्रोकर का स्पॉन्सरशिप आई है, तो लेट्स जस्ट से लाइक इफ वी कैन like get some kind of like offer from them. Okay,
So yeah, what are you guys struggling with right now in trading, of course? Thanks Ansh, thanks Faisal. अभी कुछ वैसे फाइनल नहीं हुआ है तो आई एम नॉट श्योर कि how how much they will offer, but I'll be transparent about it and I'll share everything with you guys. Recently now I was reading this book, बेस्ट लूजर विंस, ऑफ कोर्स मैं शेयर करते रहता हूँ ना। तो उसमें एक स्टोरी थी, ही टॉक्स अबाउट अ गाय जो कि नॉर्मल एक फैक्ट्री वर्कर था एंड ही स्टार्टेड ट्रेडिंग, ही वाज ट्रेडिंग गुड। वो 30 मिनट के चार्ट में ट्रेड करता था एंड उसकी पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी इज़ लाइक फिनोमिनल, ठीक है। एंड उसने फिर अपना अकाउंट खोला, ही ग्रू दैट टू ऑलमोस्ट $2 million। उसने खुद का घर बना लिया, काफ़ी अच्छे मतलब एक अच्छी लड़की से उसकी शादी हो गई एंड उसके बच्चे भी हो गए, ठीक है। एंड ही वॉज ट्रेडिंग गुड, बट वन डे ही ओपन अ पोजिशन ऑन SPX, यानी स्पाई होता है ना अपना जो US का इंडेक्स है, स्पाइडर। उस पर उसने पोजीशन ओपन की एंड ही वॉज श्योर कि प्रॉफिट में जाएंगे एंड ही रिस्क टू मच, ओके। एंड वीक के ख़त्म होते होते फ्राइडे क्लोज तक हिज ट्रेड वॉज ऑन प्रॉफिट, ही वॉज मेकिंग गुड मनी, अराउंड $400,000 के फ्लोटिंग प्रॉफिट चालू थे, ठीक है। एंड when market closed on Friday he wasn't sure कि उसे क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, he didn't close the trade। तो on the next Monday market limit up open हुआ and his position got like screwed, he lost about 52% of his account, okay। So I think this is okay, he lost their account, he lost 50% of this account, it was okay। But उसके बाद उसने जो गलतियाँ की ना उसको उसने और पोजीशन अग्रेसिवली ओपन की विदाउट फॉलोइंग हिज प्ले बुक एंड ही लॉस्ट ऑल। उसने अपने घर की जो मंथली मॉर्टेज होती है वो उसका देना फेल हो गया एंड ही लॉस्ट हिज हाउस टू, ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही लॉस्ट हिज किड्स एंड ही वॉज नाउ लिविंग एट स्ट्रीट्स। तो आई थिंक ये जो स्टोरी मैंने सुनाई की इसके पीछे की एनालॉजी ये है कि वी हैव टू लर्न कि हम किस तरह से लूज़ करते हैं ट्रेड को, ठीक है। मतलब एक ट्रेड होने के बाद जब हम नेक्स्ट ट्रेड लें, वी हैव टू मेक श्योर कि हमने वो ट्रेड हमारी प्लेबुक के हिसाब से ही ली है, बिकॉज अगर हम हमारी प्लेबुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपने माइंड के आगे गिव अप कर रहे हैं, तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो वेन एवर वी लूज अ ट्रेड वी हैव टू स्टिक विद आवर प्ले बुक, टोटली मैन। एंड मतलब वो स्टोरी सुन के आई गॉट सैड बिकॉज सी ही मेड इट एज अ ट्रेडर। हमारा ड्रीम क्या होता है एज अ ट्रेडर? टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, टू बाय अ गुड हाउस, टू बाय अ गुड कार, marry a nice woman and like live a life that way. He was doing all of that and still he chose to bet a larger size and he lost it all. That's why maintaining your mind is really really important in trading. So whenever you lose, make sure you lose with a lot of happiness, of course। मतलब जब हम कोई भी ट्रेड हमारा लॉस होता है हम उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद इट बिकॉज जिस दिन मेरा ऑर्डर स्लिप हुआ था ना, आई लॉस्ट टू ट्रेड ऑलमोस्ट 2%, ठीक है। एंड दैट वॉज एक्सेप्टेबल, बट आफ्टर दैट जितना मैंने लॉस किया लाइक ऑलमोस्ट 4% आई लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ माई इम्पल्सिव डिसीजंस about taking other trades। That was totally stupidity and now I have reduced the size to 0.5% and now my winning streak it continues, like मेरी winning streak अभी continue हो रही है, but that doesn't make sense because I already have lost a lot। So with this particular risk amount it will take time for me to uh, make back my losses। I just recently realized this, that's why I'm sharing this is really important। Okay, guys, I'm going to be closing 90% of my trade right here। If you guys are in,
I'm closing my trade right here. Almost 90% of my trade is closed right here. And now what I will do is just wait कि अगर 5 मिनट में जब तक like flip नहीं होता है market, I will be holding this trade about 90%. Okay, तो my 90% of the trade has been closed right here at around 8 pips. ठीक है, there you go. So that's what I'm saying. We have to lose with a lot of discipline. Okay, so that was the trade, guys. Reasoning behind this trade was really easy. We have a structure break right here on this point, and when this two candle closed right here, we opened the trade on this third candle and we made around 8 pips on this particular trade. ठीक है, simple trade, simple execution, and this is our first win. No, this is our like third win of the week, but on stream this is my first win of this month. So let's just update this. First win of the month. Let's go. कोई मेटाट्रेडर 4 यूज़ कर रहा है क्या इस समय? Okay, so I have closed about 90% of the trade and I'll close remaining 90 because and the reasoning behind it जो कि मैंने close किया because हम target के पास में थे, that's why I closed it. Okay, this action was not driven by fear, driven by playbook, and जो remaining percent है I'll close when I see 5-minute structure break. That's the plan. Okay, so until I see a 5-minute structure break, I won't be closing the remaining amount. But so far we have closed like 90% of this trade. Yeah, so that is it. ओके एंड बाय द वे गाइस, मैंने एक $500 का अकाउंट सेटअप किया था ताकि तुम मेरी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सको. सो दैट्स द अकाउंट राइट हियर. इफ़ यू वांट टू वॉच इट यू कैन जस्ट go at MQL5 side, go at signal and you will search this right here and मेरा name pop up करेगा. Okay, so this is right here. If you want to monitor my trading performance on stream, जितनी भी ट्रेड हम स्ट्रीम में लेने वाले हैं उस वो सारी ट्रेड्स मैं इस अकाउंट में लेने वाला हूँ ताकि लाइव तुम देख सको कि इधर वी आर प्रॉफिटेबल और नॉट. ओके, सो फार वी आर जस्ट ऑन $1 प्रॉफिट लाइक 0.23%. एंड ये सेम चीज़ मैंने ऑक्टा में भी किया है. ऑक्टा का जो कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर भी मैंने ये मेंशन किया है. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर तुम्हें मॉनिटर करनी है हमारी स्ट्रीम की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, तो ऑल यू हैव टू डू इज सर्च ऑरेंज बक्स एंड विल पॉप अप राइट हियर. दिस इज आवर अकाउंट राइट हियर. ओके, दिस राइट हियर. यहाँ से तुम मॉनिटर कर सकते हो हमारी प्रोग्रेस, व्हाट प्रोग्रेस आर वी मेकिंग. आई वाज अप लाइक 1% बट आई रिसेंटली लॉस्ट लॉट ऑफ लाइक ऑल ऑफ दोज गेन्स एंड नाउ वी आर इन प्रॉफिट अगेन. So if you wanna like monitor my performance, you can monitor from these two platforms right here. यहाँ पर हम बहुत सारी ट्रेड्स लेने वाले हैं, जितनी भी ट्रेड्स मैं स्ट्रीम में लूँगा ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि या वी आर प्रॉफिटेबल और वी आर लाइक
either we are making money or not. ठीक है, ओवर हेयर ऑन गोल्ड, गोल्ड का हम टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं. Let's just see. तो लेट्स जस्ट गो विद वीकली. वीकली में गोल्ड इज जस्ट पियर्सिंग ऑल टाइम हाइज. ठीक है, एंड आई थिंक वी कैन टारगेट 1.272 स्ट्रक्चर राइट है. दिस एरिया इज अ गुड रेजिस्टेंस. ठीक है, देयर यू गो. एंड हमारे पास एक सपोर्ट है ठीक यहाँ पर. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डेली में एंड विल सी कि वी हैव क्रिएटेड दिस सपोर्ट right here. Okay, and overall market seems to be bullish because we are closing below prior buyers high. अगर तुम कल वाली भी कैंडल देखोगे तो वो उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है. दिस इज अ गुड साइन. मतलब मार्केट इज काइंड ऑफ बुलिश ऑन डेली एंड ऑन वीकली एज वेल. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में तो यू विल अगेन सी कि मार्केट सीम्स टू बी बुलिश एंड वी हैव क्रिएटेड दिस सपोर्ट राइट हियर. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव अ रेजिस्टेंस मेड राइट देयर. इसे और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 आवर के चार्ट में एंड इन लेवल को एडजस्ट कर लेंगे. देयर यू गो. ओके, इसे और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में. तो यहाँ पर एक ट्रेड निकल कर आएगी. या एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई. आई थिंक दिस इज द टाइम टू गेट fearful टू बी ऑनेस्ट. सो दिस वॉज अ ट्रेड राइट हेयर. यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो दिस वॉज a good trade at this point. Here, this is a really small scalp if you want to take it. I'm not personally taking this trade. I'm not interested in taking trades on gold at the moment. So, but this is a good trade. I think this is positive. This fits in our criteria if you want to take a trade. But I'm not taking this personal trade. Anyone is trading gold right now? क्या gold में किसी की trade active है? Let me know. And if you are long or if you are short, let me know that too. Fazal, Ansh, are you trading gold right now? And if you are in that trade. Yeah, Akash scalping करता है, right? Okay, let me tell you how I will plan, how am I planning to close EURUSD. ठीक है, you see this candle has closed bullish, मतलब we have a support right here. ठीक है, अब if this candle break this high right here, will I close the trade? No, I won't. But if the third candle closes above the prior bar high, then I'll be interested in closing the full position. Okay, that's the plan with this ongoing trend right here. But right now we're just waiting, watching. All right, brother. This was a good trade, to be honest. If I was, अगर मैं 12 बजे एक्टिव होता तो I would have definitely took this trade. But right now, there's no point. There will be only guilt if I took this trade right now at this point. But this is a good trade, to be honest. Yeah, I totally agree with you. बट धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस आने लगेगा ना, देन फोकस ऑन कि तुम किस तरह से अपने और भी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो. बिकॉज अगर वो प्लेबुक में फिट हो रही है ट्रेड तो ऑफकोर्स यू शुड एग्जीक्यूट, राइट. देयर शुड बी नो एक्सक्यूज. बट आई अंडरस्टैंड तुम्हारा पॉइंट अभी क्या है एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग विद द सेम. तो फर्स्ट आई विल मास्टर दैट एंड देन आई विल सी कि मैं कौन सी ट्रेड ले सकता हूँ, कौन सी ट्रेड नहीं ले सकता.
वैसे ये वीक ख़त्म होने वाला है, दिस इज़ फ्राइडे. व्हाट वाज योर नंबर वन चैलेंज दिस वीक? ये वीक सबसे मुश्किल चैलेंज क्या रहा है? मेरे लिए पर्सनली आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर मी दिस वीक वाज getting out of the losses I did the prior week, and I think I did good in past couple of days, so I'm happy with this week so far. What's up bro, what happened? जल्दी ट्रेड कट कर दी. Yeah, because gold was trending. I also regret missing few moves to be honest on gold. I only able to caught this move like few pips only. So I missed missing move on gold as well. But again, my primary pair is EURUSD, so I'm not really that much affected by it. But moves to move है, and कहीं ना कहीं whenever we miss good moves, it stays in our mind and it just fucks it pretty good. So that's why we have to focus on what we do well. ओके सो there you go. यहाँ पर तुम नोटिस करोगे ना, तो मार्केट की स्टीम कम हुई है, थोड़ी बहुत बाइंग पावर यहाँ पे आई है. यहाँ पर तुम देखो, हमें ना वीकनेस ट्रेड करनी होती है सेल साइड के लिए. एंड लाइक वीकनेस का अपोजिट क्या हुआ? जो भी होगा वीकनेस का लगा, अगर मार्केट में पावर आती है जैसे पावर, दैट विल बी अ बाइंग पॉइंट. एंड अगर सॉरी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ओके, तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आती है इसका मतलब हम बाय कर रहे हैं, मार्केट में अगर वीकनेस है इसका मतलब सेल कर रहे हैं. ठीक है, तो जो अपनी एनोलॉजी है ना, जिस तरह से हम मार्केट को पढ़ते हैं कि मार्केट सेल में जा रहा है या बाय में जा रहा है, इसको आई थिंक हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है. तो आज से व्हाट वी विल से कि जब भी हम सेल के लिए ट्रेड लेते हैं तो वी विल से कि मार्केट में वीकनेस आई है. एंड अगर हम बाई की तरफ ट्रेड लेते हैं तो विल से कि मार्केट स्ट्रेंथ हो रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है. ठीक है, तो दीज टू वर्ड्स वी आर गोइंग टू बी यूजिंग गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट में वीकनेस आई थी फ्रॉम दिस पॉइंट राइट हियर 9409, एंड मार्केट जस्ट फेल स्ट्रेट डाउन. एंड उसके बाद दिस टू कैंडल वर नॉट इनफ फॉर द मार्केट to indicate strength. Okay, and I will be closing the trade if I see a current candle closing above prior bars high. मतलब अगर ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है, I'll close my remaining 10% of this trade. Okay, so that's the idea right here. अगर गोल्ड यहाँ पर नोटिस करेंगे तो गोल्ड इज pretty much really strong, really strengthens, like काफ़ी स्ट्रेंथ है गोल्ड में सिंस 9 days हो गए लगभग, 3 3 6 7 8, आज 8वां दिन है. गोल्ड में काफ़ी स्ट्रेंथ है. एंड ऑन 30 minute चार्ट यू विल सी स्टिल द सेम. ऑन 15 minute चार्ट स्टिल द सेम. तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि क्या होता है मार्केट में सिंपली. ठीक है, yeah, I agree with you, Ansh. Even not only on not only on gold but USD में भी काफ़ी अच्छे moves हुए हैं recently past week. But I fail to capitalize on those. I think I'm still having जो एक बिगिनर का माइंडसेट होता है ना कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो और ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट विल टर्न अराउंड. आई थिंक मैं वहाँ पे स्टक होके ना, मैं अपना बायस चेंज कर रहा था. मैं लाइक सेल साइड को ज़्यादा फोकस दे रहा था जितना मुझे बाय साइड को देना चाहिए. हमें हमें हायर बाई करना है और उसके हायर बेचना है टू मेक प्रॉफिट, राइट. एंड मैंने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया. मैं ये सोच रहा था कि मार्केट इतना ज़्यादा चढ़ चुका है तो ऑफकोर्स विल सी अ करेक्शन, एंड करेक्शन आया भी, बट दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. सो दैट वाज द वीक पॉइंट ऑफ दिस वीक गोइंग फॉरवर्ड. तो ये चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा.
वैसे जो ट्रेड्स हमने कल ली थी ना, उसका मैंने ब्रेक डाउन किया अपने चैनल में, तो यू शुड सी दिस राइट हियर ऑन शॉर्ट्स। आई हैव ब्रोक डाउन दिस ट्रेड राइट हियर ऑन दिस शॉर्ट। कल वाली ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स मैं आज लूँगा उसको मैं कल ब्रेक डाउन करूँगा। तो मतलब ये वाला शॉर्ट कल की ट्रेड का ब्रेक डाउन है, ये वाला उसके पिछले, ये वाला उसके पिछले, ये वाला उसके पिछले, इस तरह से। ओके, सो प्लीज़ चेक आउट द शॉर्ट्स एज वेल। And our goal is to get to 500 subscribers, so please consider subscribing to this channel if you guys are watching right now. आई एग्री विथ यू। गोल्ड के साथ भी ना, सी जब भी मार्केट बुलिश होता है ना कहीं हमारे अंदर वही डाउट होता है कि यार मार्केट इतना बढ़ गया है, मार्केट इज़ ड्यू अ करेक्शन, लेट्स नॉट एंटर इट राइट नाउ। बट आई थिंक ये थिंकिंग कहीं ना कहीं जो प्रो ट्रेडर की थिंकिंग नहीं हुई ना, दिस इज़ लाइक अ न्यू बी थिंकिंग। ये इस तरह की थिंकिंग हुई कि जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, जो लॉस कर रहे हैं, जो 90% लोग हैं, उनकी थिंकिंग है। तो वी हैव टू थिंक डिफरेंट, राइट? दैट्स दैट्स द जॉब ऑफ अ ट्रेडर। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। यानी कि नाउ मोमेंट में क्या हो रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू ट्रेड इन द नाउ मोमेंट, राइट? मतलब मार्केट में करंटली जो हो रहा है हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। तो नाउ मोमेंट में क्या हो रहा है, नाउ मोमेंट में मार्केट इज टेकिंग अ सपोर्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अ ट्रेड। बस दिस सिंपल थिंग। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो नाउ मोमेंट में गोल्ड इज बुलिश एंड आई विल बी टेकिंग बायस। नाउ मोमेंट में अगर गोल्ड सेल जा रहा है, करंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर गोल्ड सेल जा रहा है तो आई टेक अ सेल। टोटली सी, यानी 82% पीपल आर getting beaten up by market makers. That's the level of thinking we have to develop. And again, developing a thinking and like एक थिंकिंग को डेवलप करना एंड सिर्फ ये सोचना कि डेवलप कर लूँगा और डेवलप करना, दोनों में लाइक ज़मीन आसमान का अंदर है। हम देख ही रहे, इवन आई स्ट्रगल विद टेकिंग अ ट्रेड हियर एंड देयर। Okay, there you go. You see guys, we have created a support right now and market is like going bullish, and if this candle right here closes above this high right here, I'll close like remaining 10% and call it a day. That's the plan. Exactly, we have to think in the now moment. I think that's the number one lesson from that book, Trading in the Zone. ओके, तो लंदन सेशन शुरू होने वाला है, लगभग अभी 3 मिनट बाकी है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अपनी बॉटल में पानी भर के लाता हूँ, मेरा पानी लगभग ख़त्म हो गया है। ओके, एंड विल जस्ट कंटिन्यू, जस्ट गिव मी लाइक अ मोमेंट और टू। ओके, तो क्या हो रहा है, सी मार्केट इज़ लाइक क्लोजिंग, अभी भी लाइक क्लोज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो वी हैव टू वेट फॉर कैंडल टू क्लोज अबव दिस एरिया राइट हियर, and we'll close like our remaining 90%, and that's it, we'll call it a day. We'll play chess or something.
See how we are like struggling to close above this level. यानी कभी कहीं ना कहीं भी market में strength नहीं है, market is still weak. That's why we are having a hard time closing above this area. Yeah, I agree with. Like दूसरों से we can learn a lot of things, but कहीं ना कहीं जो strength आती है वो हमारे खुद के experience से ही आती है. What was your number one lesson from his stream, if you mind telling us? See, market just failed to close above this area, and right now we are having a bullish, we are having a bearish candle right here. यानी कहीं ना कहीं market में still weakness है. Focus on this current candle right here. Okay, gold seems to be rising, and we can still go to this area right here. For target 2 on gold, you can target this area right here, 127 level. This can be a good area for second target right here. People are stupid, dude. अगर टू बी ऑनेस्ट सी, अगर तुम प्रॉफिट करोगे तो भी लोग तुम्हें हेट करेंगे, और अगर तुम लॉस करोगे तो लोग तो तुम्हें ज़्यादा हेट करेंगे. बेसिकली लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेटरेड है, बहुत ज़्यादा जलन है. दे जस्ट वांट टू गेट इट आउट, दैट्स व्हाई दे हेट ऑन. There you go. See? Yeah, I totally agree with you. Okay, so it has fallen. See, that's what we are talking about. Market में अभी भी weakness है rather than strength, and that's why this candle is falling. And we are going to be closing the trade. Like we'll close the full trade once we see a 5-minute structure flip, or we see a 3 wave. This was the first wave, this was the second wave. If I see one more wave, I'll close that way, or we'll close on if market try to flip on 5-minute chart. But right now we are yet to see some kind of confirmation, so we are still holding this trade. Like of course we are out by 90%, but 10% of the trade is still running. So let's see how this is going to work out. एंड अगेन अगर तुम अब तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम राइट हेयर, दिस राइट हेयर. इफ यू वांना follow the Instagram, you can do it from right here. गोल्ड में भी इनफ स्ट्रेंथ तो है, बट लाइक वीकनेस कहीं ना कहीं नहीं है गोल्ड में. दैट्स व्हाई इट इज़ rising really well, and we have a nice pullback, and right now we're rising again, and this will be a good target one if you want, and this will be a good target too. Okay, so इस एरिया में डेफिनेटली बाइंग हो रही है, बट लेट्स जस्ट सी हाउ दिस कैंडल क्लोजेस.
I'm waiting for a candle to close below or above the prior high or low. That's where we'll close our trades. Okay, so 7 people are watching us right now. And guys, please start documenting your journey. It can be either on Instagram, it can be either on YouTube or Twitter as well. Okay, so this candle has been closed and we closed below the, we like barely closed below the prior bar. So I think we can still hold this trade, like 50% we can, like 10% we can still hold. Okay, we are closing above the area we marked. We still have 3 minutes to go. So let's just see how this goes. Okay, I think ये वाले area में ना still there is a lot of pressure. That's why market is like turning weak as soon as we come here. Okay, अगर इस समय मैं गोल्ड पे एंटर होता तो आई विल एंटर one more position as soon as this candle start to close above this candle. This is our current bar, this is our prior bar, previous bar or prior bar. And we are in the market open, okay, and that's why there is a lot of volume in the market. You will see there's a lot of volume in the market, even though candles are not moving that much, but still we have a lot of buying and selling in this current bars. There you go. We still have 2 minutes to go on gold. Let's just see if we can close above this area right here. क्या चैट कोई हमारी चैट में आईसीटी को फॉलो करता है, इन सर्कल मेथड को? या फिर कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड करता है प्रॉफिटेबली, ऑफ कोर्स? Okay, so again we failed to close above the prior bar, so this 10% of the trade still continues.
Okay, we have 30 seconds to go on this candle close. I think this is a good trade to take. You can take a trade on the next candle right here. Your stop loss can be according to 15-minute ATR value. That will be right here. And for target, this can be the target right here. This is of course target 1, and this right here can be target 2 right here. See right here, this is a positive candle close. I think we can easily go to this target. The probability of going to this target right here is like 90%, and this target right here is around 60%, so anything can happen. See, let's just see if this trade going to work or not. I'm not inside this trade right now, because I already took this trade. I'm not taking this trade right here. Okay, so you can see risk to reward ratio is pretty much pretty bad in this one. But we are just testing it out. But I think this is a good entry right here for a trade. Let me just mark it as trigger T1. Okay. And probability is almost like 90% for price to go from this point to this area right here. Let's just see if this is going to work out or not. Over here on EURUSD, we are falling pretty well actually. This is our second wave basically. This was our wave 1, this is our wave 2, and we are going down. So let's just wait and see. Yeah, I agree with you. मुश्किल से 10 ट्रेड स्टॉप लॉस होने के बाद उन्हें एक ट्रेड मिलती है अच्छी. एंड आई थिंक ना, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था. दिस राइट हियर, ईमान ट्रेडिंग का. यू शुड वॉच दिस वीडियो राइट हियर. उसमें एक्सपोज करता है वो, एक इस वाले वीडियो में और एक इस वाले वीडियो में. दिस इज रियली फन टू वॉच वैसे. यू शुड वॉच दिस वन एंड दिस वन and see how much views ICT takes. Like ICT का नाम अगर तुम टाइटल में रखते हो तो you will get about 300k views instantly. See, 82k views in like 2 weeks. So we are still falling on USD. Over here on gold, we have printed a nice wick right here on 5-minute chart. तो अगर तुम बिग फिल पे ट्रेड करते हो, दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर द ट्रेड. ओके, ओके. तो यूएसडी इज स्टिल फॉलिंग, गोल्ड इज स्टिल राइजिंग. पहले मुझे लगता था कि गोल्ड एंड यूएसडी आर इंटरकनेक्टेड, तो अगर एक में मूव एक साइड में हो रहा है तो सेकेंड दैट गोल्ड और यूएसडी शुड फॉलो दैट. बट काफ़ी बुरी तरह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि दोनों अलग अलग पेयर है और दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए. Okay, so there you go. Target 1 has been achieved right here. Almost achieved. अभी तक हुआ नहीं है. And over here we are creating some kind of support. I think market is spending too much time here, but I still wait for a prior bar close. There you go. Target 1 has been achieved on gold. तो it will be interesting to see कि market target 2 तक जाता भी है कि नहीं जाता.
I think it can break previous high. Totally, gold can break previous high. Gold is just buying, like बहुत pressure है gold में. There you go. I think I should have took this trade, right? But कोई बात नहीं. Market is going nowhere. We'll take more and more trades like this. There you go. Target one has been achieved. It was a good scalp, to be honest. Over here on Euro USD, we have closed another 5-minute candle, and seems like the market is still weak. Strength is not seen. I agree with you. देखते हैं. वैसे आज न्यूज़ है, तो अगर इस सेशन में अगर तुम्हें ट्रेड मिल गई है तो डोंट फोर्स इट. सीधा न्यूज़ आने का वेट करो एंड किस तरह का रिएक्शन देता है मार्केट, उस पर फोकस करो एंड दैट विल बी गुड. न्यूज़ है अराउंड 7 बजे की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. या 7 बजे की न्यूज़ है एंड लगभग 1 2 3 तीन इवेंट है. तो इट्स गोइंग टू बी फन टू सी कि मार्केट किस तरह से मूव होता है शाम के समय. एंड अगेन हमारे संडे से डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि मंडे से हमारा जो स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 11:30. ओके. मंडे से विल बी स्ट्रीमिंग फ्रॉम 11:30. मंडे से नहीं, यूएस सेशन तो जल्दी खुलेंगे बट अप्रैल से हमारा जो स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा, अप्रैल 1 है. आज स्ट्रीमिंग टाइम विल बी 11:30 rather than 12:30. Okay, so I think this candle can close above this prior buyer's high. देखते हैं क्या होता है. Okay, I think we're still running good.
Okay, we have 6-7 seconds to go. Let's just see if we can close above this area right here. Okay, so again we failed to close above this level right here. Market is still weak. ओके तो किसी ने कोई ट्रेड को एंटर किया या फिर एवरीबडी स्टिल वाचिंग द मार्केट? Yeah, goal seems like it's restricting, but again time frame is too low. Yeah man, we are going to close the stream in like 6 minutes too. So have a great nap. Bye and see you tomorrow at the same time. Bye bye, have a great day ahead.
I think I'm going to be closing the full trade right here, guys, and call it a day. All right, guys. Thank you everyone for showing up. We'll see you tomorrow at the same time. Love you all and see you tomorrow.